Okay. So today we are going to describe one concept called as causes of expanding public expenditure. See, I should tell you that there is enormous growth, huge growth of public expenditure. मैंने टेक्निकली स्टैटिस्टिकली आपको बताया था that public expenditure in the year 1950-51, it was 900 crores. At the same time, हमने reform period देखा था 1991-92. It was 72,317 crores. And latest year देखा था 2018-19. उसमें हमने देखा था public expenditure was 17,29,682 crores. तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का ग्रोथ मैंने जब डिस्क्राइब किया तभी आपको बहुत क्लियरली बता दिया कि देयर इज ह्यूज ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड. During the planning period, the public expenditure has enormously increased. So today in our lecture, we are going to describe or we can say reasons for growth of public expenditure. Causes or reasons for growth of public expenditure. See, there are various reasons for expanding public expenditure. Of that, the first one is increase in government activities. देखो मैंने बहुत पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब बताया था that every government has emphasized on achieving two important goals. Every government has emphasized in achieving two important goals. One was social welfare and other was economic welfare. Because every government has a basic objective of development of the country. It has an objective of development of the country. Of those objectives of development of any country, I can say that there is increase in government activity. अभी government development के ऊपर ध्यान देगी तो automatically government की जो expenditures है, those expenditures are bound to rise, are supposed to increase, and as a result there is huge public expenditure. Second important cause was of expanding public expenditure is
पॉपुलेशन, जैसे 1950-51 में इंडिया का जो पॉपुलेशन 1951 में इंडिया's population was around 36 crores, 36.1 crore, and अभी it is approximately 130 crores. There is huge growth of population. अभी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ में क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ते जाएंगे. The need requirement of the population will also increase. As a result, if we observe, there is tremendous growth of public expenditure in India. Then the third important cause of expanding public expenditure is urbanization. Now, what do we exactly mean by urbanization? Can any one of you help me to know that? Urbanization का मीनिंग कोई हेल्प करेगा मुझको? Urbanization is a process. Urbanization is a process in which rural areas are slowly and steadily converted into urban areas. Slowly and steadily converting the rural areas into urban areas. That process is called urbanization. तो अभी आप लोगों का तो मुझको पता नहीं है, but I have been born and brought up in Vasai-Virar region. मैंने देखा है 1990s में वसई क्या था और अभी वसई क्या है. There is huge difference in both the Vasais. उस वक्त में I remember very well कि उस वक्त में अपने पास जो था that was ग्राम पंचायत था. अपने पास ग्राम पंचायत था और अभी we have महानगर पालिका. We are now known as city. We are city. पहले अपना सिटी नहीं था. Earlier we were village. Government has spent huge amount of money on construction of roads, construction for supply of electricity, etc., etc. This money spent by the government is called urbanization, and this process is expanding day after day, year after year. As such, it is increasing the public expenditure. The next one, fourth major public expenditure, fourth major cause for expanding public expenditure. Fourth one was, we can say, defense. Defense of the country, protecting the country from internal and external aggression. Jैसे we take example of India. In India, we have some very fantastic neighbors. We share some part of our boundaries. We share some part of our boundaries with Pakistan, which is internationally acknowledged as terrorist country. Similarly, we share
boundaries with Afghanistan. Hold on, I'm relogging. आवाज एको हो रहा है सुन. हेलो हेलो, जस्ट चेक, अभी बराबर आ रहा है? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। So I was discussing that we have some very fantastic neighbors, जैसे पाकिस्तान, which is internationally acknowledged for terrorism. We share some part of our boundaries with Afghanistan. Afghanistan is also well known for terrorism in the form of Taliban, in the form of Lashkar, ISIS, etc. We share boundaries with China. China पिछले काफी दिनों से highlighted है for its issue related to Leh Ladakh and Arunachal. चाइना का ऐसा बिलीफ है उनके जैसे दिखने वाले लोग जहां जहां पे वो सब एरिया उनका. India shares boundary with Nepal. I think around 75 to 80% Nepalis depend upon India for their income, shabji करके. फिर भी पिछले कुछ दिनों से even that is very much in limelight for its activities against India. India shares boundary with Bangladesh. Bangladesh is very much well known for transfer of illegal currencies, transfer of illegal weapons, and also it is very much well known for transfer of illegal Bangladeshis to come and settle in India. Where we have one neighbor called as Sri Lanka. वहाँ पे भी एक terrorist organization है called as LTTE, which is also popularly known for that responsible for the death of Honorable Prime Minister Mr. Rajiv Gandhi. So everywhere we have some fantastic neighbors. As a result, we can see that government has to spend huge amount of money on defense, which has increased the public expenditure in India. Then, fifth important reason for growth of public expenditure is democracy. I should tell you that India is the largest democracy in the world. Remember, India is the largest democracy in the world with, अगर democratic country के point of view से अगर हम देखेंगे तो India is the first country with the highest population. No doubt, in terms of population, India ranks second,
but China is not a democratic country. China is a socialist country. कि वहां पे गवर्नमेंट का ही सब चलता है, लोगों का कुछ नहीं चलता है. India is a democratic country. We appoint the government. So the largest democracy in the world. We have various forms of government. Central government, state government, and local government. लोकल गवर्नमेंट बोल दिया मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत एक्सेट्रा. सब जगह पे लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट करते हैं बाय द वे ऑफ इलेक्शन. So as we have a huge boundary, we have many states, we have many corporations, many gram panchayats. तो इन सब के इलेक्शंस कंडक्ट करने के ऊपर भी गवर्नमेंट का ह्यूज एक्सपेंडिचर होता है. So even democracy has led to growth of public expenditure. Then sixth one we have is inflation. इन्फ्लेशन के ऊपर, इन्फ्लेशन का मीनिंग आपको पता है क्या है? बोलो क्या है इन्फ्लेशन का मीनिंग? इन्फ्लेशन का सिंपल मीनिंग होता है कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइस. वेरी करेक्ट. तो इन्फ्लेशन के ऊपर देखो, बीच में एक आमिर खान ने एक गाना भी बनाया था, महंगाई डायन वाला. तो इनफैक्ट इन्फ्लेशन ये सिर्फ आम आदमी को अफेक्ट किया ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट ऑल्सो परचेसेस वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट, एंड ड्यू टू दिस इन्फ्लेशनरी प्रेशर गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर बढ़ गया है उन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर. So this has led to growth of public expenditure. Then seventh one is industrial development. गवर्नमेंट, अगर आप ऑब्जर्व करोगे इंडिया में गवर्नमेंट ने प्लानिंग कब से चालू किया है? डज एनीबडी नो? इज एनीबडी अवेयर व्हेन इंडिया स्टार्टेड प्लानिंग? लास्ट ईयर पढ़ा था आपने 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में था ये. व्हेन वी स्टार्टेड इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया 1991 में. कौन है रही है? ध्वनि है? ध्वनि थोड़ा चाय पी ले, नींद में से उठ जाना. इंडिया स्टार्टेड प्लानिंग, बाकी लोग ने करेक्ट लिखा है, इट स्टार्टेड प्लानिंग इन द ईयर 1951. वी नो प्लानिंग इन इंडिया एज डैश. Planning in India is known as dash. Five-year plans, very good. The first 5-year plan, if you remember, concentrated on growth of agriculture. The first 5-year plan concentrated on the growth of agriculture, and it was one of the most successful plans in India. उसके बाद में जो second 5-year plan था, which was recommended by Professor P.C. Mahalanobis, उसमें उन्होंने concentrate किया था that we should develop industries. There must be development of industries. As such, we can see that since 1956, जब second 5-year plan हुआ, तब से अब तक every year government spends huge amount of money on the development of industrial sector. It spends huge money on development of industrial structures. जैसे
इंडस्ट्रीज के लिए स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाते हैं. दिस आर ऑल leading up to huge government expenditure. Then, last but not the least, one of the major reasons for expanding public expenditure is disaster management. Disaster management. अभी आप ऑब्जर्व करो, इंडिया में एट प्रेजेंट देयर आर सम स्टेट्स लाइक बिहार, असम, मेघालय. यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है अभी. क्या चल रहा है प्रॉब्लम, किसी को पता है? वेरी गुड. वहां पे अभी फ्लड्स चल रहे हैं. तो गवर्नमेंट को वो फ्लड्स में से लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है. गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड मनी. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. अगर आपको याद रहेगा, लास्ट ईयर वसई विदर्भ बेल्ट में भी हेवी फ्लड्स थे. और आपको याद रहेगा, नॉर्थ इंडिया नहीं, राजस्थान से एक ट्रेन आई थी और वो वसई से विरार के बीच में फंसी हुई थी वो ट्रेन. तो आपको अगर याद रहेगा, उसमें गवर्नमेंट ने उनकी एक यूनिट है कॉल्ड एज एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ. एनडीआरएफ के टीम को उन्होंने उतारा था, जहां पे उन्होंने उस ट्रेन के सारे पैसेंजर्स को सेफली रेलवे स्टेशन तक लाया था.